Hello everyone, welcome to Arpita Sharma classes. I am Arpita Sharma, your educator, and today we are continuing with the relationship of Prime Minister and President and what are the important articles that link the Prime Minister with the President. Prime Minister including the Council of Ministers. Okay, so let's get started. Now there are three basic articles that link the Prime Minister and the President together. So these are Article 74, then we have Article 75 and then we have Article 78. These are the three articles that link the Prime Minister with the President. Now, when we talk about Article 74, you have to understand that this article of the Constitution deals with the status of Council of Ministers. So, this article deals with Council of Ministers. 74 बात करता है Council of Ministers की. And Article 75 deals with all the other things, miscellaneous things like appointment, responsibility, functions, salary, allowances of the ministers. Ministers की जितने भी responsibilities हैं, allowances हैं, उनको जो salary मिलती है, क्या qualification चाहिए, ठीक है, appointment कैसे होता है, time period कितना हो सकता है, तो वो सब Article 75 में आता है. So first is Council of Ministers 74. 75 talks about all the other things like qualification, oath, salaries, allowances, ठीक है. Now here when we talk about Article 78, जब हम Article 78 की बात करते हैं, what does Article 78 speaks about? Article 78 talks about the duties of Prime Minister. 78 बात करता है Prime Minister की duties की, ठीक है. Now when we talk about the Council of Ministers are divided into three categories. Three categories होते हैं Council of Minister के. First category is the Cabinet Ministers. Cabinet is the chief policy formulating body of central government. Remember this. Okay. तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पॉलिसी फॉर्मुलेटिंग बॉडी होती है, चीफ मेन पॉलिसी फॉर्मुलेटिंग बॉडी, वो कैबिनेट की ही होती है. एंड कैबिनेट मिनिस्टर्स हेड द इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज. प्लीज राइट इट डाउन, ठीक है. ये जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, दे हेड द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज. काफी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज होती है जिनको वो हेड करते हैं. नाउ व्हाट कैन बी द एग्जांपल्स ऑफ इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज? इट इज डिफेंस. पहली इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री हो गई डिफेंस. फिर हो गई आपकी यहाँ पर फाइनेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स हो गया, होम मिनिस्ट्री हो गई, ठीक है. तो ये सारे इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज हैं जिनको हेड करते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स के मिनिस्टर्स. Okay, now coming towards the next category, that is ministers of state. These can either be given independent charge of ministries or departments, or they can be attached to cabinet ministries also. Okay, now next is deputy minister. They are attached to the cabinet ministers. Deputy minister ना cabinet ministers के साथ ये attached department होता है, ठीक है. They help them in their administrative, political and parliamentary duties. Okay, deputy ministers. And at the top of all these three ministries we have the prime minister, okay, who is heading them. Point clear हुआ यहाँ तक? Now Council of Ministers may also include a deputy prime minister. Council of Minister में एक deputy prime minister भी हो सकता है. Deputy prime ministers are appointed only for political reasons. Okay. Now coming forward to Article 74. इसके constitutional provision पढ़ लेते हैं. So here Article 74 talk about Council of Ministers to aid, write it down, to aid and advise the President. Council of Ministers क्यों बनाए जाते हैं? प्रेसिडेंट को हेल्प करने के लिए और उसको एडवाइज करने के लिए. सो द एडवाइस विच इज गिवन बाय मिनिस्टर्स टू प्रेसिडेंट, इट शैल नॉट बी इंक्वायर्ड इनटू एनी कोर्ट. ये जो एडवाइस देते हैं प्रेसिडेंट को, इसको किसी भी कोर्ट में आप इंक्वायरी में नहीं डाल सकते. इट्स जस्ट एन एडवाइस. ओके, प्रेसिडेंट मे रिक्वायर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू रिकंसिडर सच एडवाइस. ओके, प्रेसिडेंट इफ ही इज नॉट लाइकिंग द एडवाइस, ही कैन आस्क द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू रिकंसिडर इट. Okay, यहाँ तक point clear हो गया. And he shall act in accordance with the advice which is given to him after such reconsideration. मान लो for example, Council of Minister has sent an advice to President. Okay, President said, the Council of Ministers, he told the Council of Minister to reconsider the advice. Again, after reconsideration, the Council of Ministers sent the advice back to President. Then he will accept the advice, or he will act in accordance with the advice which is sent to him after reconsideration. Point clear हुआ यहाँ तक?
All right. Now we will study Article 75. अब हम पढ़ेंगे Article 75 को. So Article 75 talks about the other provisions regarding the ministers. So here the Article 75 says that Prime Minister shall be appointed by President. Article 75 क्या कहता है कि Prime Minister जो है उसको कौन अपॉइंट करेगा? उसको President अपॉइंट करेगा. He shall be appointed by the President. Okay. And other ministers shall be appointed by President on the advice of Prime Minister. In the Council of Ministers, the other ministers will also be appointed by the President, but on the advice of the Prime Minister. Okay, यहाँ तक point clear हुआ. Now another important point which is written in Article 75, please write it down यहाँ पर. Article 75 में एक और point है which says that total number of ministers, जितने भी total number है ministers के in the Council of Ministers including Prime Minister, ठीक है, in the Council of Minister, it shall not exceed 15% of the total strength of Lok Sabha. जितने भी टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स हैं इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर, वो लोकसभा की टोटल जो स्ट्रेंथ है उससे 15% से ज्यादा नहीं होने चाहिए. 15% या उससे कम. ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर प्रीलिम्स. प्लीज राइट इट डाउन. इस पॉइंट को प्लीज लिख लीजिए. आई एम रिपीटिंग अगेन. टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल नॉट एक्सीड 15% of total strength of Lok Sabha. This provision, when it was added, this provision was added by the 91st Amendment Act of 2003. Another important point for prelims. 91st Amendment Act 2003 का जो पास हुआ था, उसके तहत ये provision add किया गया था हमारे Article 75 में. Okay, यहाँ तक point clear हो गया. Another important point is that a minister who is not a member of parliament, एक ऐसा minister जो कि member of parliament नहीं है, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, for any period of 6 consecutive months, लगातार 6 महीने के अंदर वो member of parliament या लोकसभा या राज्यसभा का नहीं रहा है, he or she shall cease to be a minister. तो वो minister भी नहीं रहेगा. ठीक है. Now here's a small announcement before we move forward. You can skip this announcement if you are not interested. There are students who are commenting unnecessarily without paying any heed to what is being taught in the lecture. Do not comment unnecessarily until and unless you have a doubt. If you want to skip the announcement, you have that choice also. Okay, chalo. So stop looking at the negatives and stop please finding negatives, because पढ़ाई के टाइम पर कोई नेगेटिव होता ही नहीं है. ठीक है, तो नेगेटिविटी को छोड़िए और पढ़ाई कर लीजिए चुपचाप. चलो, ये सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जो कमेंट सेक्शन में अननेसेसरी बकवास करते हैं और उनको पता है, ठीक है, कि ये उनको टारगेटेड है. आप लोगों के लिए नहीं है. चलो, तो let's get started. See here, Unacademy is going to increase the prices of the GS and the combo subscription of Unacademy Plus. तो ये जो extension है ये 23rd दिसंबर से होने वाला है. ठीक है, तो 23rd दिसंबर से prices increase हो जाएंगे. उससे पहले अगर आप Unacademy Plus की subscription लेते हो तो आपको prices कम ही मिलेंगे, प्लस आपको डिस्काउंट भी मिलेगा अगर आप ये कोड यूज करते हो अर्पिता 10 ARPITA. ठीक है, नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं 22 दिसंबर से और कार्निवल ऑप्शनल का भी स्टार्ट हो गया है, यानी कि हमने नए ऑप्शनल भी लॉन्च कर दिए हैं. प्लस अनअकैडमी के लर्निंग ऐप के ऊपर आपको फ्री टेस्ट सीरीज भी मिलती है, स्टैटिक की भी और करंट अफेयर्स की भी. तो ये सारे लिंक्स ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, तो आप इन सभी एडवांटेजेस का फायदा उठा सकते हो 23 दिसंबर से पहले. Okay, do not forget to subscribe if you are willing to and if you are planning to take coaching for your UPSC CSE preparation. Another important point in the Article 75 is the mention of collective responsibility. So what exactly is collective responsibility? See, this article clearly states that the Council of Ministers is collectively, together they are all responsible towards the Lok Sabha for their acts of omission or commission. ओके, चाहे वो कोई चीज ओमिट कर गए हैं या कोई चीज कमिट कर रहे हैं, दोनों ही केस में वो लोकसभा को जवाबदेह हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं. ठीक है, दे हैव टू प्रेजेंट एक्सप्लेनेशन टू द लोकसभा फॉर देयर एक्टिविटीज. एंड देयर इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल इन आर्टिकल 75, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी. हियर वी हैव कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, हियर इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी. इट मीन्स, इट स्टेट्स, यू कैन से दैट द मिनिस्टर्स होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट के जब तक इच्छा है तब तक मिनिस्टर्स ऑफिस
होल्ड कर सकते हैं. दिस मीन्स दैट प्रेसिडेंट कैन रिमूव अ मिनिस्टर इवन एट अ टाइम व्हेन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंजॉयज द कॉन्फिडेंस ऑफ लोकसभा. भले ही कॉन्फिडेंस जीता हुआ है लोकसभा में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने, फिर भी प्रेसिडेंट चाहे तो किसी मिनिस्टर को रिमूव कर सकते हैं. बट येस, देयर इज अ कंडीशन. द प्रेसिडेंट रिमूव्स अ मिनिस्टर ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर. सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पर ही. ठीक है, तो ये कंडीशन आ जाती है. So Council of Ministers in the states is constituted and functions in the same way as the Council of Ministers at the center. जैसे यहाँ पर Council of Ministers center में है, ऐसे ही same state में भी है. ठीक है, same they are in state also, which is Article 163. Okay, point clear हो गया. Here Article 75, which is at the center, and at state we have Article 163, under which we have the Council of Ministers. ओके, सो दिस वॉज टूडेज टॉपिक. ये था आपका आज का टॉपिक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में एंड प्राइम मिनिस्टर के बारे में. नेक्स्ट वी विल स्टडी द टॉपिक ऑफ प्रेसिडेंट. ओके, अब नेक्स्ट हम प्रेसिडेंट का टॉपिक पढ़ेंगे.